Assalamualaikum students. I hope you are doing well. Students, today we'll learn about verbs and rhyming words from the textbook Leap into Language page number 4. In book page number 4, so our first topic is verbs. What is verbs? Verbs are words that shows actions such as jumping, reading, running, etc. स्टूडेंट इसमें वो कह रहे हैं कि verbs are words, verb जो ऐसे words हैं that shows actions जो हमारे actions को just like as हमारे काम करने की हालत को शो करते हैं such as जैसे कि jumping भी तो एक action है ना, reading, रनिंग, कितने सारे एक्शंस हम जैसे रीडिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, ये सारे हमारे एक्शंस है ना. Now our first activity is fill in the blanks. Fill in the blanks with is, are, am. Helping words is, are, am is helping words to complete the sentences. Students नीचे आपको sentences दिए गए हैं, उसमें वो कह रहे हैं is, are, am helping verb को put करके sentence complete करें. देन आइडेंटिफाई द नाउन. इसमें से सेंटेंस में से आपने नाउन आइडेंटिफाई करना है एंड वर्ब, और वर्ब को भी आइडेंटिफाई करना है. जैसे अभी हमने वर्ब पढ़ा है ना कि वर्ब हमारे काम करने के एक्शंस को शो कर रहे हैं. अभी हमने इसमें वर्ब जंपिंग, रीडिंग, रनिंग, और अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताए हैं स्लीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एंड राइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स. और आपने इसको जो गिवन ब्लैंक्स है इसमें राइट करना है. स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस है द कैट डैश स्लीपिंग. इसमें हमने पहले हेल्पिंग वर्ब पुट करना है इज, आर, एम में से. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा इज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट. हम हमेशा ही, शी, इट और एक शख्स या चीज़ के साथ हमेशा इसको पुट करते हैं. आगे है द कैट. इसमें हमें नहीं पता चल रहा, ही भी नहीं है, शी भी नहीं है, इट भी नहीं है, लेकिन कैट एक है ना, एक कैट का कह रहे हैं, तो फिर इसके साथ हम क्या पुट करेंगे? इज़. ही, शी, इट के साथ हमेशा और एक या एक शख्स या चीज़ के साथ हमेशा इज़ पुट करते हैं. द कैट इज़ स्लीपिंग. आगे उसमें वो कह रहे हैं नाउन आइडेंटिफाई करें और वर्ब आइडेंटिफाई करें. सो वी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स. सो कैट इज एन एनिमल्स ना, सो द कैट इज द नाउन. स्लीपिंग इज आवर एक्शन ना, तो सो वर्ब इज स्लीपिंग. नेक्स्ट वी डैश गोइंग टू द म्यूजियम. वी डैश गोइंग टू द म्यूजियम. स्टूडेंट्स वी, यू, दे के साथ वी, यू, दे और एक से ज़्यादा शख्स या चीज़ों के साथ हम आर लगाते हैं. सो वी पुट आर. वी आर गोइंग टू द म्यूजियम. वी आर गोइंग टू द म्यूजियम. सो वी आइडेंटिफाई नाउन एंड वर्ब. Noun is the name of person, place. Museum is a place, so our noun is a museum. And verb is our action na, so going is our action, so verb is going. Next, I dash reading of funny story books. I dash reading a funny story book. Students, I के साथ हमेशा हम am helping verb लगाते हैं. कौन सा helping verb लगाते हैं? am. I am reading a funny story book. So noun is the name of person, place, animal or thing. So book is a noun. It is a thing na, so noun is a book. Funny story book, reading. Verb, so verb is a reading. It is our action na, so verb is a reading. Our next topic, rhyming words from workbook Leap into Language page number 2. In page number 2, student, first of all you mention date and day. Okay, word builder. Choose words from the box. Choose words
that rhyme with the words given below. That the words that rhyme with the words given below. Okay, स्टूडेंट इसमें वो कह रहे हैं ये आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें राइम वर्ड्स आपने इन वर्ड्स के साथ इनके राइम वर्ड्स लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज राइम वर्ड्स? राइम वर्ड्स इज अ वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम आर सिमिलर एंडिंग साउंड. राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनके लास्ट वाला एंडिंग साउंड होते हैं ना, वो उनके साथ उनका एंडिंग साउंड क्या होता है, एक जैसा सेम होता है. Use commas to separate the words, just like as use commas to separate the word. Okay, first word is told, around, pants, sold, cents, bound, gold, hold, sound, found. First, he asks words that rhymes with gold. Gold, इसमें वो कह रहे हैं कोल्ड के राइम वर्ड्स आपने लिखने हैं. कोल्ड का हमने पढ़ा था टोल्ड, सोल्ड, गोल्ड एंड होल्ड. कोल्ड, टोल्ड, सोल्ड, गोल्ड, होल्ड. सो नेक्स्ट इज वर्ड्स दैट राइम्स विथ टेंट्स. टेंट्स, पैंट्स, सैंड्स, pants and sands. So we write sands, put comma and write pants. Students, next words that rhyme with the ground. So ground rhyming word is ground, around, bound, sound, found. Around, bound, sound, found. So we write around, put comma, bound, comma, found, sound. So our next activity is C activity from the words cold, ground and tents. Cold, ground and tents which have the same numbers of rhyming words. Write them below. स्टूडेंट इसमें वो कह रहे हैं कि किसके जो है ना एक जैसे rhyming words हैं, इक्वल मतलब नंबर में. जस्ट लाइक हमने कोल्ड के भी 4 राइमिंग वर्ड लिखने हैं और किसके ग्राउंड के भी, जबकि टेंट्स के सिर्फ 2 राइमिंग वर्ड्स हैं. सो वी राइट cold and ground have same number of rhyming word. Student, this is all about of our lectures. I hope you can understand it very well. Thank you.